So, hi everyone. We are discussing about the force and the laws of motion chapter of class 9th of science. Here now we are discussing about the laws of motion. So, these laws of motion are given by Newton. So, these laws are also called the Newton's laws of motion. Before this, we discussed about inertia and the linear momentum. So, we'll discuss these laws one by one. So, first of all, we have first law. We call it Newton's first law of motion, right? Newton's first law of motion. What does it states? If an object is at rest, it will continue at rest, or if an object is in uniform motion, it will continue in uniform motion unless an external force is not applied on it. That means if an external force applied on an object is equals to 0, then it will remain in the same state as it is. So this is called a first law. What does it mean? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा unless an external force is not applied on it, right? So if an object is at rest or in uniform motion, it continuously or it continue in same, or it remain, we can also write it continue in same state of rest or uniform motion, or it will remain at rest or in uniform motion unless an external force is not applied right? So if an object is in uniform motion or at rest, it will continue in the same state, that is at rest or in uniform motion. अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करेगा जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, unless we have applied an external force on it to change its state. So this law जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है. दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज केप्ट ओवर द टेबल एट रेस्ट, तो ये उसी सेम स्टेट में रहेगी जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसे चेंज नहीं करते इसकी स्टेट. If this car is moving with uniform velocity, it will continue move with the same uniform motion unless an external force is not applied on it. कोई ब्रेक्स वगैरह की हेल्प से इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा तब तक ये सेम यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, right? So this is Newton's first law. So there are the two concepts which comes from the Newton's first law. Number one, there is something external effort या any push or pull which is required to change the state of an object. यानी कि कुछ तो एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एफर्ट है जब हम चीजों पे अप्लाई करते हैं, it can change its state. That external effort or push or pull we call force. So this law gives the definition of force, right? From this Newton's first law,
Newton's first law, we get two terms. Number one is definition of force, only the definition. ठीक है. Second one is the term inertia. So two concepts are coming from the Newton's first law of motion. Number one is the definition of the force, only the statement या concept, right? And second is inertia, कि कुछ तो ऐसी टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स की जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते. देयर दिस टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर स्टेट इज नोन एज inertia. We have already discussed about the inertia and its types and its practical applications also we have discussed yesterday. So these are the two concepts which comes from the Newton's first law of motion, right? And if you want to explain कि जो भी एग्जांपल्स है इनर्शिया के, those also comes in the category of Newton's first law. कि अगर कोई टेबल पे बुक रखी है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा. फॉर एग्जांपल अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द यूनिफॉर्म मोशन. It will continue in the same state of uniform motion unless an external force is not applied on it. ठीक है. So these are examples of Newton's first law. ठीक है. So these are the two examples. What are these two examples? Number one is a book kept on the table. ठीक है. Second, a car moving with uniform velocity. ठीक है. एक बुक रखी है टेबल पे, वो टेबल पे ही रहेगी unless an external force is not applied on it. A car is moving with uniform velocity. It will remain in the same state of uniform motion unless an external force is not applied on it. So this is Newton's first law. ठीक है. Then we talk about Newton's second law. Newton's second law of motion. What does it states? कि rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, and this change in the direction of the applied force. So what does it state? It states that rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, and this change occurs in the direction of applied force, right? What does it mean?
we talk about in the previous classes about the linear momentum. That linear momentum is the product of mass and the velocity of the object. P is equals to mv. It is a vector quantity. Its SI unit is kg meter per second. So the rate of change of linear momentum when you applied the force. For example, if I'll have this book, ठीक है, it is at rest. If I'm applying the force, it change its velocity from 0 to some velocity, है ना? तो पहले ये रेस्ट में थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. When I apply the force, it change its velocity from 0 to suppose 5 मीटर पर सेकेंड. सो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, अब मास तो चेंज नहीं होगा. P is equals to mv. अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा, दैट मीन्स चेंज इन द मोमेंटम. तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया, ये कितना चेंज होगा? जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगी इस पे, उतना ज्यादा ये मूव करेगा, यानी कि उतना ज्यादा इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा. दैट मीन्स उतना ज्यादा इसका मोमेंटम चेंज होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट मीन्स इट्स मोमेंटम is equals to 0, क्योंकि उसकी velocity 0 है when the object is at rest. So how we can drive this? It is also very important to drive it. According to the statement, the rate of change of linear momentum, we can write the change with dp over dt, rate of change. dp या delta p आप भी आप use कर सकते हो. This is the delta p. This also indicates the change in the linear momentum. So dp by dt is directly proportional to the force applied. जितना आप force apply करोगे, उतना ज्यादा momentum में change होगा. ठीक है? When a fast moving car collide with diversion or collide with any another wall or any other object, तो जितना ज्यादा उसकी स्पीड थी कार की, उतना ही ज्यादा डैमेज होगा. ठीक है, टू बोथ द थिंग्स, आइदर द कार एंड द वॉल, जिस भी चीज से वो टकराई है, कोलिजन जिस भी चीज के साथ हुआ है, तो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन या डैमेज उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा स्पीड होगी. क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद पहले मान लो 120 मीटर पर सेकेंड या 160 किलोमीटर पर आवर, जनरली जो कार्स होती है उनकी जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है. तो 160 किलोमीटर पर आवर से अगर कार मूव करती हुई आ रही है, तो सडनली वो किसी चीज से स्ट्राइक करती है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आएगा. मोमेंटम डिक्रीजेस. पहले जितना भी उसका मास था और जितनी वेलोसिटी थी, उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे. उसके बाद कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ, तो जितना ज्यादा हाई स्पीड इनिशियली थी ऑब्जेक्ट की, उतना ही ज्यादा चेंज आएगा जीरो होने में. 160 से 0 आने में, या 200 से, तो 200 से 0 आने में ज्यादा चेंज हुआ, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज होगा मोमेंटम में. और जितना ज्यादा चेंज होगा मोमेंटम में, उतना ही फोर्स वो एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे और डिस्ट्रक्शन उतनी ही ज्यादा होगी. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. या हम एग्जांपल ले सकते हैं द कोलिजन बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक. क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से भी मूव कर रहा होगा, तो ओवरऑल अगर हम उसका मोमेंटम निकाल लें तो वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अ बाईसाइकिल. बाईसाइकिल का क्योंकि मास बहुत कम है, वेलोसिटी आप उसकी कितनी हाई कर लो, मतलब कितना हाई जा सकता है बाईसाइकिल का, 100. ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा बाईसाइकिल का मास और वेलोसिटी का, दैट इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक. तो ट्रक जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द बाईसाइकिल. ठीक है, एक बाईसाइकिल मूव करती हुई आ रही है, हम उसको थोड़ी सी फोर्स से स्टॉप कर सकते हैं, या वो अगर उसके सामने बाईसाइकिल के सामने अगर कोई पर्सन खड़ा है, सो इट अप्लाई नॉट मच फोर्स ऑन दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बाईसाइकिल. लेकिन वही ट्रक है, अगर वो बहुत कम स्पीड से भी मूव करता हुआ आ रहा है, तो and when it collide with the person may kill. ठीक है, पर्सन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, या इवन उसकी डेथ भी हो सकती है पर्सन की, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोडक्ट है ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि जो मोमेंटम है ट्रक का, दैट इज मच मोर देन द बाईसाइकिल. यू अंडरस्टूड? तो जो मोमेंटम है
जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, या जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज हो रहा है. सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. आई होप यू अंडरस्टूड. आप ट्रक को नहीं रोक सकते विद योर हैंड, आप बाइसाइकिल को रोक सकते हो, क्योंकि बाइसाइकिल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम है. आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको, बाइसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए भी और स्टॉप करने के लिए भी. वहीं अगर ट्रक है तो ट्रक को आप सामने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको रोकोगे जो भी उसकी स्पीड होगी, जो भी उसका मोमेंटम है वो ज्यादा है. सो यू नीड ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स टू स्टॉप दैट. या अगर कोलिजन अगर हो रहा है तो ट्रक अप्लाई द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दैट पर्सन. ठीक है. व्हेन देयर इज कोलिजन बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक, डैमेज किसकी ज्यादा होगी? वैसे तो दोनों की होगी, बट ज्यादा डैमेज किसकी होगी? जो लाइटर बॉडी है, यानी कि कार है. क्योंकि आप जब ओवरऑल मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ कार. तो कौन ज्यादा अप्लाई करेगा फोर्स? जिसका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि जो चेंज होगा मोमेंटम में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ट्रक हैज अप्लाइड मोर फोर्स ऑन द कार. तो डैमेज जो होगा ज्यादा वो किसको होगा? कार को होगा. लाइटर बॉडी को ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि जो हैवियर बॉडी है इट अप्लाइज मोर फोर्स ओवर द लाइटर बॉडी. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. If we talk about its expression, then dp by dt, that means it shows the change in the momentum. ठीक है. This term shows the change in the momentum with respect to time. That means we call it rate of change. dp by dt is rate of change of linear momentum. What is LM? Linear momentum. So this rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, right? And what is P? Write it as equation number 1. So P is equals to mv, है ना? Can we put P as mv? So we put this P value in first equation. So put equation number 2 in the equation number 1. Then what we got? This F we can write. What is our equation number 1? It's dp over dt is directly proportional to F, है ना? और F is directly proportional to dp by dt. Can we write this? Can we rearrange this equation? When we put the value of P from equation number 2 to equation number 1, how we can write? d over dt. P की जगह हमने रख दिया mv. ठीक है. मास नेवर चेंज. d by dt का मतलब है चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो मास इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन टेक इट आउट. व्हाट इज लेफ्ट? It's dv over dt. ठीक है. dv over dt. And what is dv over dt? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is known as acceleration, right? dp over dt, dv over dt, rate of change of velocity. Velocity का change होना with respect to time is known as acceleration. So when we put this as acceleration, so how our equation becomes? F is directly proportional to m and a. dv upon dt is a, so this becomes F is directly proportional to ma. When we remove this proportionality sign, we have a constant k, so F is equals to kma. And in SI systems, the value of k is equals to 1. So our equation becomes F is equals to ma. This is the mathematical expression for the force. ठीक है. What is this? F is equals to ma. See one thing. The definition of force comes from the Newton's first law, and the derivation or the mathematical expression of force comes from the second law. F is equals to ma. So this one is the
mathematical expression of force. F is equals to ma. So force is a product of mass and the acceleration of the object. F is equals to ma, right? So two concept comes from the Newton's second law. Number one is the mathematical expression of force, and there is also the second term which we call impulse. Okay? And also the concept of linear momentum is also comes from this second law. Okay? Mathematical expression, the concept of linear momentum, and the concept of impulse generates from the second law, right? So it's being Newton's second law of motion, which three terms comes from here? Number one is F is equals to ma, that is mathematical expression of the force. Second, the concept of linear momentum. Linear momentum. And third one, the concept of impulse. Right? We talk about impulse. Impulse is the large amount of force exerted for a short period of time. यानी कि थोड़े समय के लिए जो लार्ज फोर्सेस होती हैं उनको हम इम्पल्स कहते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज फोर्स फॉर एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल थोड़े समय के लिए फोर्सेस लगती हैं, बट इनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत लार्ज होता है. दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. मेजर ऑफ द impact of the forces for a short interval of time, that is called impulse. If we talk about the examples, I hope you understood about the examples of the Newton's first law and the second law. Second law examples are if there is collision between a car and a truck. So truck applies greater amount of force on the car or a bicycle because the rate of change of linear momentum of the truck is much more than the rate of change of linear momentum of the car. ठीक है. Second example, if there is a high speed car or a high speed vehicle, when it collide with something else, the destruction may be much more. The destruction is as much as high as its speed. जितना high speed होगी उतना ही destruction ज्यादा होगा. ठीक है. So these are some examples of Newton's second law of motion. About the impulse, we will talk in the upcoming lecture. So we end our here today's lecture over here. Thank you.